Bismillahirrahmanirrahim. Today is 27th of August 2020, class 10th. So we are going to today deal with the explanation of result of monohybrid inheritance. The results which which Mendel got by doing various experiments on pea plant Pisum sativum, and he crossed different pea plant characters or traits. He got the ratio of 3:1, and let us explain those experiments what he did. um, Mendel took the parent phenotype, that is tall plant, and he crossed these tall plants with the dwarf plants, to dwarf pea plants. So these tall plants, they have the genotype represented by in case of dominant genes, these factors, while then later called as genes. जो factors फैक्टर टर्म यूज़ किया था मेंडल ने, उसको बाद में कहा गया कि यही जीन्स हैं. तो ये फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस जो टॉल प्लांट्स में पाया जाता है वो है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. हियर द जीनोटाइप for the trait or character height is represented by capital T letters, and the trait dwarf or character dwarf height is represented by small letters. What happens when crossing takes place, when the fertilization takes place between these factors, between these genes of inheritance, or when characters takes place, these gametes first get separated. That is here what happens, these get separated. And this is also so called law of segregation. Here gametes get separated, and then after that what happens, crossing over takes place between these. Here this is the factor of inheritance or genes of inheritance. They first get separated. So these gametes get separated, these gametes then cross over. They because fertilization takes place, zygote is formed. During the formation of zygote, during the process of fertilization, these gametes first get separated. So Mendel did experiment of crossing the tall plants with the dwarf plants. When these gametes got separated, then they crossed with each other, because during fertilization zygote was formed, and during fertilization these gametes crossed with each other. The gametes responsible for F1 generation, responsible for giving produced F1 generation, crossed with each other. That is tall plant gametes crossed with the dwarf plant gametes. So we got all the, so the capital letter as this is the dominant. You can see here, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो capital T है, this is the dominant gene, this is the dominant factor. It will always show dominance, it will always express in the F1 generation, or if F1 generation genotype, or in the phenotype, it will express itself, while the dwarf plant could not, dwarf plant factors could not express it in the F1 generation. So in the F1 generation, genotype, we got this genotype with capital letter T and small letter t. Capital letter T represents the dominant gene and trait or factor for tall plants, and small t represents the factor of inheritance for or factor for dwarf plants. In the F1 generation, we got all the phenotype, all the plants were tall, because this dominant gene expressed itself, but this recessive gene represented by small t could not express in the F1 generation. So here what happened, Mendel got all the plants when he crossed tall plants with the dwarf plant. He got F1 generation phenotype
इन द टॉल प्लांट्स। इसका मतलब हुआ कि जो इसको F1 जनरेशन में प्रोडक्ट मिला, दे ऑल द प्लांट्स वायर टॉल, तमाम प्लांट्स टॉल थे, क्योंकि यहाँ पे डिवार्फ प्लांट जो थे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो रिसेसिव ही रह गए। वो डोमिनेंट जीन जो था तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, एंड ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वायर टॉल। तमाम प्लांट्स जो F1 जनरेशन के थे वो सभी टॉल थे, वो सभी लंबे थे, इनमें से कोई भी छोटा नहीं था। दिन ही क्रॉस मल्टीप्लाइड द F1 जनरेशन फिनोटाइप। जो फिनोटाइप मिल गया तो फिर चूँकि फिनोटाइप रिप्रेजेंट करता है फिजिकल अपीयरेंस को, हमें कोई बॉडी ऑर्गेनिज्म या प्लांट हमें बाहर से कैसे दिखता है, ये छोटा है या बड़ा है, ये लंबा है या छोटा है। इट कुड बी टॉल, लंबा, और एक ये डिवार्फ होगा, छोटा होगा। फिनोटाइप F1 जनरेशन में तमाम जो प्लांट्स थे दे वायर टॉल। तो फिजिकल अपीयरेंस उनकी क्या थी कि वो सभी टॉल थे। हालांकि मेंडल ने इसको क्रॉस किया था विद द डिवार्फ प्लांट्स, तो एक्सपेक्टेशंस थे कि कुछ प्लांट्स टॉल होंगे, कुछ प्लांट्स शॉर्ट होंगे, क्योंकि क्रॉस ब्रीड किया है। तो बट F1 जनरेशन में जब फिनोटाइप देखा गया तो तो ये देखा गया कि तमाम प्लांट्स जो थे tall plants थे। Then he did again, he crossed again the F1 generation phenotype। जो F1 generation phenotype या genotype इसको मिला था, this is a genotype and this is a phenotype। appearance सभी tall है तो ये phenotype हो गया, और जो genes यहाँ पे हमें हासिल हो गए that represents the genotype, F1 generation genotype। इसके बाद F1 क्रॉस किया गया, F1 जनरेशन फिनोटाइप फैक्टर्स के क्रॉस किया गया। F1 क्रॉस में F1 जनरेशन फिनोटाइप लिया गया, दिस इज द F1 जनरेशन फिनोटाइप ऑल वाइल द टॉल प्लांट। इनमें से दो प्लांट्स लिए गए और उनको क्रॉस किया गया, मेडल ने इनको क्रॉस किया। और फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस में पहले ये गिमिट्स, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस और दीज आर द जीन्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहले ये गिमिट्स जो थे एज यूजुअल ये सेपरेट हो गए, पहले ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन और ड्यूरिंग क्रॉसिंग और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये फैक्टर जो हैं, ये जीन जो हैं, ये गेट सेपरेटेड, दे गेट सेपरेटेड, दे गेट सेपरेटेड। और गिमिट सेपरेट होने के बाद एज यूजुअल ये भी इनको भी फर्टिलाइज किया गया, इनको भी क्रॉसिंग कराई गई, और क्रॉसिंग के दौरान क्या फर्टिलाइजेशन हो गई, ये फैक्टर्स फिर से जुड़ गए, और हमने एक्टिव जनरेशन जीनोटाइप जो हमें मिल गया वो था टी स्मॉल कैपिटल टी। यहाँ पे आप कैपिटल टी दो पेयर्स में नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पे हमने अलग, मेंडल ने अलग से जो जीनोटाइप था वो अलग से हासिल हो गया। यहाँ पे कैपिटल दो लेटर्स थे टी के, इसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी, इसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी, इसके बाद चौथा जो था दे वायर रेसेसिव जीन्स, रेसेसिव फैक्टर्स स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसका मतलब ये जो हुआ, जो एक्टिव जनरेशन फिनोटाइप मिल गया मेंडल को, तो इसमें तीन टॉल थे और एक डिवार्फ था, एक डिवार्फ था। सो दैट रिजल्ट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। जो F1 जनरेशन का रिजल्ट था उससे बिल्कुल अलहदा था F2 जनरेशन के रिजल्ट्स। आप जीनोटाइप देख लीजिए, जीनोटाइप भी अलग है, F1 जनरेशन के जीनोटाइप और F2 जनरेशन के जीनोटाइप जो जीन्स हैं वो भी अलग हैं, और फिनोटाइप एज यूजुअल अलग हैं। यहाँ पे चारों के चार जो है ये लंबे हैं, और फिर जीनोटाइप यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। लेकिन यहाँ पे F2 जनरेशन में जीनोटाइप पहला वाला प्लांट जो था इसके दोनों कैपिटल टी मिल गया, यानी कि दोनों डोमिनेंट जीन्स मिल गए। दूसरे में डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन, तीसरे में डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन, और चौथे में दोनों रेसेसिव जीन्स, यानी कि तीन प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो डिवार्फ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें यह समझ आ रहा है कि जो रेसेसिव जीनस हैं वो उन्होंने अपने आप को F1 जनरेशन में या F1 जनरेशन में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए,
genotype, but in F2 generation these recessive genes expressed themselves, and the genotypic ratio which we got where capital T, capital T one plant, small t capital T two plants, and recessive T one plant. That means dominant two genes in the first plant, dominant gene, recessive gene in two plants, and recessive genes in the in fourth plant. So this was a genotypic ratio, that is one tall plant, total tall plant with dominant genes, two tall plants with one dominant gene and one recessive gene, and one dwarf plant with both recessive genes, that is small t. And we got the overall phenotypic ratio 3:1. That means 3 were tall and one was small or dwarf. This is the explanation how Mendel crossed these plants, and this was the first law of Mendel's first law of heredity or monohybrid cross, and law of segregation. What was law of segregation? That is यहाँ पे जो गिमिट्स हैं क्रॉसिंग करने से पहले वो सेग्रीगेट हो गए, वो अलहदा हो गए. This was on these basis Mendel called is as law of segregation. So law of segregation इसी के बेस पे इसका नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे गिमिट जो हैं अलहदा होते हैं, सेग्रीगेट हो गया, अलहदा होना, एंड मोनोहाइब्रिड का क्रॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड का यहाँ पे एक ही फैक्टर, एक ही कैरेक्टर, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट was taken into consideration. This was Mendel's first law of explanation, law of monohybrid cross and law of segregation, in which Mendel said that in F1 plants these gametes first separated, and only one character was taken into consideration, and only one character was brought under experiment, and he saw that in the F1 generation all the plants were tall, but in the F2 generation only the ratio he got was, phenotypic ratio he got was 3:1. That is the recessive genes which were not able to express in F1 generation, जो recessive genes थे जिन्होंने खुद को F1 generation में express नहीं कर पाया, वो F2 generation जब क्रॉस किया तो F2 generation में उन्होंने F2 generation में इन recessive genes ने खुद को express किया, and the phenotypic ratio Mendel got was 3:1. That is 3 plants were tall and 1 plant was short. So this was the explanation of results of monohybrid inheritance done by Geiger Mendel. And with this we completed this first law of Mendel regarding the monohybrid cross and law of segregation. Thank you.